Hello children, welcome to my channel Economics with Purnima Sharma. So yesterday I explained to you money multiplier, which is very much important for board examination point of view because the different way the questions may be asked, right? In today's class I will teach you the central bank which is an apex body, right? Which controls, regulates and directs the entire banking and monetary structure of the country. That is known as central bank. Because like in your school, you know all teachers are teaching, but there is a one supreme power in the school, that is principal, right? Principal used to control, regulate the entire school, give direction to each and every teacher. So without the head, right, the function cannot be proper. So to make the banking structure and the monetary system of the country, we must have an apex body, the institution working on the top, right, which can control, regulate and give direction to the entire monetary system and banking structure of the country. This is the main role of central bank, right? So what is the central bank? Is an apex body, right? It's an apex body, institution on the top, right? That controls, right? That controls, regulates and directs the entire banking and monetary structure of the nation. This is known as central bank. Are you clear? So central bank in India, we have, you know that RBI, Reserve Bank of India. The central bank, every financially developed countries have their own central bank, right? To just control, regulate and direct their monetary and banking structure. So in India, we have RBI, Reserve Bank of India, right? Which is not for us, right? We are not in the direct contact of RBI, right? All the commercial banks and the government, they have direct contact with RBI. We are with contact of commercial bank, right? So, you know, RBI Act passed in which year? 1934, right? In 1934, the RBI Act was passed, right? And RBI established on which day? 1st April 1935. 34 the Act was passed and 1st April 1935 RBI was established. These two dates are important for MCQ, right? Come to the functions of RBI. What are the functions of RBI? As an apex body, right? Working in the nation to control, to regulate, to direct the entire monetary system, the entire banking structure of the nation. So what are the functions? By doing these functions, RBI can control, RBI can regulate, RBI can direct by doing these functions, right? So these functions I am taking first, the currency authority, right? Currency authority in RBI issues the having the sole authority to issue the currency notes in India, right? In all the countries, right? RBI, central bank, is the sole authority to issue the currency, right? In India, RBI issue all the paper currency notes except 1 rupee note. 1 rupee note as well as the coins are issued by whom? Finance minister, right? 1 rupee note, you will see the signature of finance minister there, not of governor of RBI. While in other notes, you will see the signature of governor of RBI, right? So all currency notes except 1 rupee note is issued by central bank RBI, right? Coins and 1 rupee note, that is issued by finance minister, right? Government. And but to put into the circulation, how much 1 rupee note will come in circulation, how much coins will come into circulation, right? So that responsibility lies on RBI. Be very much clear, right? Which system we are adopting in India to issue the currency notes? RBI. That is here minimum reserve system.
Minimum reserve system where RBI must have the reserves of 200 crore rupees. How much? 200 crore rupees here to be authorized to issue the currency note. If RBI is not maintaining the reserve of 200 crore rupees, 115 crore rupees that is of gold and 85 crore that is of government security, foreign security, etc. Right? So here if RBI is not having this minimal reserves of 200 crores, this authority will not be with the RBI. So currency authority, clear? Currency authority, what are the advantage here of being currency authority with RBI? RBI is the sole authority to issue the currency notes. And what are the advantage of this function here, which is given to RBI, sole authority issue the currency notes, right? Advantages. As a sole authority of currency in India, right? Currency issue with RBI. First point, uniformity. Uniformity is maintained if only RBI issue the currency notes. So the currency will be having of the same design, right? Assume if all the banks are issuing the currency note, PNB by its own type, State Bank of India by its own type, and suppose this is HDFC by its own type, all the banks are issuing their currency notes of their own design. See the problem faced by all of us. It will be quite difficult for us to find out what is fake currency and what is original. At this moment also we are facing problem. The general people cannot make the difference between the fake and original note, right? So assume if the different design currency will be in the market, so it will be a problem for the people to recognize. Here, so uniformity is maintained if the sole authority is given to RBI to issue the currency notes, right? Public faith. Public faith. If only RBI is issuing the currency note, so RBI will maintain the value of money, right, by using its monetary policy that I will teach you in the same lesson, right? So RBI will maintain the value of money and we can have the faith in the monetary system of the country. If suppose, because you know face value of rupee is negligible, is too low as compared to the face value is too high as compared to the currency as a commodity. Face value is high as compared to the value of currency as commodity. Because if 500 rupees note, if you will see, right, what is the commodity value? The paper used, printing, etc. That is too less as compared to the 500 rupees, which is its face value written on the note, right? So public faith, it is too much important, right? It only can be maintained when sole authority is given with RBI, and RBI can maintain the value of money, can maintain the value of money. Now, inflation and deflation is checked by whom? By RBI, by its monetary policy, fiscal policy and monetary policy, right? So if suppose RBI using monetary policy can check the value of money, right, then the public will have faith. Why we store the money, right? Why we are depositing our money with banks? Because we know after the 5 years, 10 years also, the money, value of money will not fall much, because it is maintained by RBI being the sole authority. So second point of advantage, the public faith, right? It developed the public faith in the monetary system of the country, right? Next one here, we can see it gives central bank power. It gives
central bank power to control money supply. Money supply, and to have a check on inflation and deflation, right? Which is caused because of excess money supply. Deflation is caused because of deficient money supply, right? So if only the central bank is having the sole authority, so if their economy is going through deflation, so central bank will do the changes in its monetary policy to inject the money supply in the system, and deflation will be overcome. If there is inflation, right, so RBI will withdraw, right, the excess money supply from the system, right, to check the inflation. अगर मान लो इतनी मनी चाहिए, मनी सप्लाई एज पर द साइज ऑफ जीडीपी, और मनी सप्लाई बढ़ जाती है, इतनी बढ़ गई, तो ये क्या है? एक्सेस मनी सप्लाई. Excess money supply. Excess money supply will cause excess demand. Excess demand, and excess demand increase the price level. Price level. If price level continuously rises, appreciable and consistent rise in the price level, that is converted into inflation. ठीक है? अगर मान लो मनी सप्लाई बढ़ जाएगी, किससे? साइज ऑफ जीडीपी से. कितनी मनी सप्लाई होनी चाहिए? जितना आउटपुट है, राइट? लेकिन आउटपुट सपोज 50 करोड़ है, लेकिन मार्केट में मनी सप्लाई कितनी है? 60 करोड़ है. तो 10 करोड़ क्या हो गई? एक्सेस मनी सप्लाई. लोगों के पास एक्सेस पैसा आ गया. जब एक्सेस पैसा आया तो लोगों ने क्या किया? डिमांड किया, क्योंकि पैसा है तो वी विल डिमांड. तो इट विल क्रिएट एक्सेस डिमांड. आउटपुट कितना है? 50 करोड़ का. डिमांड कितनी है? 60 करोड़ की, क्योंकि मनी सप्लाई क्या है? 60 करोड़ है. तो एक्सेस डिमांड विल इंक्रीज द प्राइस लेवल. कंपटीशन अमंग द बायर्स लीड टू प्राइस हायर. अगर मान लो एक्सेस डिमांड है बिकॉज ऑफ एक्सेस मनी सप्लाई, तो क्या होगा? प्राइस क्या होगी? बढ़ने लगेगी, क्योंकि इसमें कंपटीशन है बायर्स में कि मैं खरीद लूँ, मैं खरीद लूँ, मैं खरीद लूँ, राइट? तो प्राइस बढ़ जाएगा. प्राइस बढ़ जाएगा इफ इट प्राइस इंक्रीजेस कंसिस्टेंटली, appreciable rise in the price for a period of time is known as inflation. तो RBI क्या करता है? RBI do the changes in its monetary policy to reduce this money supply, to withdraw this excess money supply from the system. I will teach you in the same topic, right? So if suppose the inflation is checked, in the same way deflation also can be checked. If suppose this is the money supply required, this is the size of GDP, right? But money in the system is this much. तो ये क्या है हमारी? Deficient money supply. Deficient money supply. Deficient money supply means deficient demand and excess supply. यहाँ पे क्या हुआ? This is excess supply. ठीक है? Deficient money supply cause the excess supply. डिमांड कम हो गई और सप्लाई अब ज्यादा हो गई. Excess supply competition among producers, seller to sell the commodity. क्योंकि मार्केट में खरीदने वाला ही नहीं है. ठीक है? किसको बेचें? क्योंकि पैसा ही नहीं है लोगों पे. कितना पैसा होना चाहिए? इतना होना चाहिए, और है कितना? इतना. तो इतना मनी सप्लाई क्या है? ये कम है लोगों के पास. तो कंपटीशन किस में होगा? सेलर में, बेचने वालों में. और बेचने वालों में क्या? दे विल ट्राई टू सेल देयर कमोडिटी बाय लोअरिंग द प्राइस, राइट? सो व्हिच विल लीड टू राइज इन fall in the price level, which will cause deflation, right? So it gives central bank power, ठीक है, to control the money supply,
एंड टू चेक द इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन। और मनी सप्लाई कम है ज़रूरत से तो उसको बढ़ाना, अगर मनी सप्लाई ज़्यादा है जीडीपी से हमारी तो उसको कम करना। कौन कर सकता है? आरबीआई। इफ आरबीआई इज ओनली हैविंग द इज द सोल अथॉरिटी टू इशू द करेंसी। क्यों? क्योंकि अगर मान लो स्टेट बैंक को, पंजाब नेशनल बैंक को, इनको भी अथॉरिटी दे दी टू इशू द करेंसी नोट, तो आरबीआई तो मनी सप्लाई कम करने के लिए चेंज कर रहा है, किसमें? मॉनेटरी पॉलिसी में, लेकिन उसके साथ पीएनबी और सेंट्रल बैंक मनी सप्लाई को बढ़ा रहे हैं। तो क्या होगा? द फंक्शन एक्शन बाय द आरबीआई विल नॉट बी इफेक्टिव, क्योंकि मैं तो कम करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन आप अगर उसको बढ़ाएंगे तो फॉर द कंट्री एज ए होल मनी सप्लाई विल नॉट रिड्यूस, राइट? सो दिस इज हियर being the sole authority, only RBI can have a control. It gives power to control the money supply, to check the situation of inflation and deflation, right? Next point of function, it makes government enable, it makes government capable, enable to supervise RBI, ठीक है, in term of currency issue. RBI controls सेंट्रल बैंक एंड सेंट्रल बैंक कंट्रोल्स आरबीआई, दोनों एक दूसरे को चेक करते हैं। आरबीआई किसको चेक करता है? अगर मान लो गवर्नमेंट इन्फ्लेशन है और खूब खर्च कर रही है तो क्या करेगा? आरबीआई उस गवर्नमेंट को बोलेगा चेक योर एक्सपेंडिचर, इकोनॉमी इज गोइंग थ्रू इन्फ्लेशन, डोंट डू अनप्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट किसको चेक करता है? आरबीआई को, ठीक है। तो अगर मैं गवर्नमेंट हूँ और मुझे सिर्फ एक ही को चेक करना है रिगार्डिंग द इशू ऑफ करेंसी नोट, तो इट इज क्वाइट इजी फॉर मी टू सुपरवाइज ओनली हियर यू एज सोल अथॉरिटी आरबीआई। इफ आई हैव टू चेक द डिफरेंट बैंक्स, ठीक है, इन टर्म ऑफ इशू ऑफ करेंसी नोट, इट विल बी क्वाइट डिफिकल्ट फॉर मी। तो इट गिव्स हियर, इट मेक्स द गवर्नमेंट अनेबल टू चेक and to supervise the RBI in term of issuing the currency note easily, right? Next one here it is, it stabilizes internal and external value of money. First of all you have to focus internal and external value क्या है? Internal value क्या है? Purchasing power of currency in the nation. Inflation होता है तो किसकी वैल्यू बढ़ती है? कॉमोडिटी की, और किसकी वैल्यू कम हो जाती है? मनी की। ये मार्कर अभी सपोज 25 रुपए का है, इन्फ्लेशन प्राइस लेवल बढ़ा, ये 30 रुपए का हो गया, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई? बढ़ गई 25 से 30। लेकिन किसकी परचेसिंग पावर कम हो गई? आपकी मनी की। पहले 25 रुपए में बाई पेइंग 25 रुपीज आई कुड परचेज दिस मार्कर, बट नाउ आई हैव टू पे 35 रुपीज मोर। तो किसकी पावर कम हुई बच्चों? मनी की, क्योंकि अब सेम अमाउंट ऑफ मनी कैन नॉट परचेज दिस मार्कर, I have to pay 5 rupees more because the purchasing power of money has reduced because of inflation. ठीक है? तो this is internal value, inflation and deflation. RBI stabilizes the internal value by having a check on inflation and deflation by using its monetary policy. ठीक है? External value, $1 is equal to 84 rupees. This is what external value of currency. It is also maintained by RBI by using the foreign
exchange reserves lying with whom? RBI. RBI is the last function I explained to you, I taught you. I have written the flow chart. The custodian of foreign exchange reserve. Foreign exchange किसके पास रहता है? RBI के पास. उसके पास reserve है. तो by using the reserve, right, of foreign currency, RBI have a check on the external value of money. ठीक है? If country wants the value should be between $1 is equal to 82 to 84 rupees. तो अगर 84 रुपीज़ से आगे या 82 रुपीज़ से नीचे जाएगा तो आरबीआई क्या करेगा? डॉलर को बेचना और खरीदना शुरू करेगा इन एक्सचेंज ऑफ रुपीज़ बाय यूजिंग दिस रिजर्व एंड विल मेंटेन द external value of currency between $1 is equal to 82 to 84 rupees. Are you clear? So this is all are the advantages. ठीक है? As a sole authority of currency issues with RBI. RBI के पास sole authority है, उसके ये advantages मैंने आपको पढ़ाए. क्या पढ़ाया? Uniformity, एक जैसी करेंसी है, राइट? एक जैसी करेंसी है और इंटरनल और एक्सटर्नल वैल्यू बोथ आर मेंटेन बाय आरबीआई. ठीक है? एंड आई एक्सप्लेन टू यू द आरबीआई कैन कंट्रोल द मनी सप्लाई इन द मार्केट टू चेक इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन, कैन चेक द इंटरनल वैल्यू. ठीक है? बाय यूजिंग द फॉरेन रिजर्व कैन यूज चेक द एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ करेंसी ऑल्सो. दैट्स व्हाई द पब्लिक हैव फेथ. ठीक है? इसलिए पब्लिक का फेथ भी डेवलप होता है. Or it is easy for the government to check only one institution in term of issuing the currency notes, regarding the currency notes, right? So these are the various functions, various advantages as the sole authority of issue currency note with RBI, right? So today I will teach only this, and tomorrow I will teach you the bankers, bank for the government and bankers bank and supervisor. One more topic which I told you in the money chapter, I will teach you after teaching LRR concept, that I am just making you realize. What is money versus high powered money? I think today it will be clear to you. Money, यहाँ पे मनी है और ये हाई पावर्ड, जिसकी पावर ज़्यादा हाई पावर्ड. So what is money? This is C plus demand deposits. C, money is C plus, C is the currency, paper notes and coins. And what is high powered money? High powered money. What is high powered money? This is C and cash reserves. Which is what? LRR. Cash reserve. LRR. Yesterday I explained to you LRR and money multiplier both are inversely related. ठीक है? 1 upon LRR, that is money multiplier. Understood? Money multiplier, if it is 1 upon 10 into 100, so 10 times, right? And if it is 1 upon 5, LRR is 5, then into 100, then it will be 20, right? So here if the LRR falls, the money multiplier value increases. It means the banks have more funds to lend money if the LRR reduce. क्योंकि क्या cash reserve mandatory, the banks have to maintain in cash form. अगर ये आपके पास का डिपॉजिट है और इतना उसको कैश रखना है तो इतना उसके पास फंड्स है टू गिव द लोन्स, और अगर ये कम हो जाए तो उसके पास फंड्स ज़्यादा बढ़ गए, अगर ये बढ़ जाए तो उसके पास लोन के लिए फंड्स कम रहेगा. और लोन का बैंक कैसे देता है? बाय डिपॉजिटिंग इन देयर अकाउंट. और जब वो डिपॉजिट करता है बोरोवर के अकाउंट में तो दैट इंक्रीजेस द डिमांड डिपॉजिट. तो कैश रिजर्व LRR इज ए बेस.
ठीक है, फॉर डिमांड डिपॉजिट, इन्फ्लुएंस द डिमांड डिपॉजिट। अगर ये बढ़ा तो डिमांड डिपॉजिट कम हो जाएंगे, क्योंकि ये बढ़ा तो उसके पास फंड्स कम रहेगा लोन के लिए फंड्स कम रहेंगे तो डिमांड डिपॉजिट कम बढ़े। तो दोनों में क्या है, इनवर्स रिलेशनशिप, राइट। तो दिस गिव बेस टू डिसाइड डिमांड डिपॉजिट, राइट। तो दैट इज व्हाई इट इज नोन एज हाई पावर्ड, क्योंकि ये इसको डिसाइड कर रहा है। हाई पावर्ड मनी किसको डिसाइड कर रही है, मनी को। तो ये क्या हुआ, जिसमें कि कैश रिजर्व्स है, हाई पावर्ड, क्योंकि कैश रिजर्व डिसाइड द डिमांड डिपॉजिट। ओके, बट टुडे इट इज इनफ। सो टुडे अगेन I will end my class with a motivational quote for you as usual, right? क्योंकि मुझे नहीं पता कौन बच्चा कब मोटिवेट हो जाए, कौन बच्चा कब पढ़ना स्टार्ट कर दे, क्योंकि मुझे आपको बाई फोर्स नहीं पढ़ाना है, मुझे पढ़ाना है बाई चॉइस, बाई इंटरेस्ट, बाई दिल। और उसके लिए क्या चाहिए, मोटिवेशन। क्या चाहिए आपको, मोटिवेशन। And first of all, I want to give thanks to you all, ठीक है, कि today I completed the 100 subscriber, ठीक है। अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको क्लास ऐसा लगेगा बच्चों, आई एम नॉट लिविंग ए सिंगल कॉन्सेप्ट, बहुत आराम से पढ़ाऊंगी मैं आपको, राइट। तो कोड फॉर टुडे यू हैव टू कीप इन योर माइंड, थिंक अपॉन इट। मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। सपने तो बहुत देखते हो आप लोग, सभी देखते हो, जिससे पूछो क्या करना है, सीए बनना है, सीएस में, उसके अलावा सपना ही नहीं होता कॉमर्स के बच्चों का, ठीक है। लेकिन मंजिलें तो सीए तो वही बनेंगे जिनके सपनों में जान होगी। सपने देखना इज नॉट इनफ, सपनों में जान डालना है, ठीक है। तो मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, पंख होने से क्या होता है, हौसलों से उड़ान होती है, ठीक है। कहते हैं ना कि पंछी क्यों उड़ रहा है, क्योंकि पंख है। इतना छोटा सा पंछी वो कहाँ से उड़ रहा है, अपनी विल पावर से, अपने हौसले से, ठीक है। तो आप लोगों को भी क्या करना है, हौसला बुलंद, काहे के लिए, पढ़ने के लिए, विच विल मेक योर ब्राइट कैरियर, ठीक है। तो आप अपने को सपनों में जान डालिए और अपने हौसले से पढ़ना शुरू करिए। देखना मंजिल कितने पास होगी, मंजिल पाना बहुत आसान होगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। गॉड ब्लेस यू।